Hello, what's up everyone? आज I lost over $40 day trading. So let's have a trade recap and see what went wrong here. आ जाएंगे अपने trading view पे and let us open German 40 first, okay? We got German 40 here. I'll explain you every single thing that went wrong here. Okay, सबसे पहले actually this was like a more of a intuition trade क्योंकि मैंने lower higher time frame को ज़्यादा consideration में नहीं लिया था. Okay, so first of all, higher time frame is CRT थी. Okay, 4 hour we had a CRT, which obviously indicates that we are going to take out these lows, okay, these lows would be get taken. Then I scaled out on 30 minutes. तो सबसे पहले okay, let's go to 15 minutes. 15 मिनट पे यहाँ पे दिख रहा है कि एशिया का हाई वी हैव टेकन आउट, ठीक है, एंड देन वी हैव रिवर्स्ड एंड नाउ वी हैव टेकन एशिया लो. ठीक है, अब एशिया लो लिया. Also we took out this liquidity and now my initial plan was to uh, trade a pullback अराउंड 50% ऑफ दिस एफवीजी. ठीक है, ये वाली जो एफवीजी दिख रही है ना, आई हैड अ प्लान टू बाय अराउंड 50% ऑफ दिस, बट लेट्स सी व्हाट वेंट रॉन्ग देयर. स्केलिंग डाउन टू 5 मिनट्स. 5 मिनट्स. okay, let's go to 3 minutes. Okay, so 3 minutes में we had an FVG over here. Okay, we inverted that FVG and we invalidated bearish. We pushed above. We retested in this area, so I went long here. My initial target was this, like it was around 1:1. Okay, like around this, but then I extended my TP a bit just to get that 50%. But यहाँ पे what went wrong is we had a 3 minute order block which I ignored, and then I ended up losing around $25 from this. Okay, and और एक बड़ी गलती मेरी ये थी, मैंने हायर टाइम फ्रेम सबसे पहले चेक नहीं किया कि क्या होने वाला है. ऑल्दो नाउ आई एम सीइंग CRT एंड ऑल, बट जब ट्रेड लेते टाइम मेरे दिमाग में बस था कि आई वुड टारगेट 50% ऑफ दिस FVG और बस आई वुड लुक फॉर रिवर्सल्स. So yeah, this was a loss. Now let's go to gold. Gold, obviously we would start from 4 hour. 4 hour पे we were fully bullish. यहाँ पे एक CRT दिख रही है, which means obviously we would close above these candles and these candles. Okay, we go to 1 hour time frame. You would see pretty much Asia manipulated here by a wick. Okay, that was the CRT. After this, I was looking for long. We broke out Asia range. Okay, this is where we broke Asia range. Okay, this is the level. Uh, I was actually in the 3 minute looking for just a small pullback, and I would enter off of that and then target 1:3. तो जैसे ही एशिया का रेंज ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, वी सो रिजेक्शन. ठीक है, और हल्का सा मार्केट नीचे आया. यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था. अब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को मैंने क्यों टारगेट किया था, वो उसके पीछे पीछे का थॉट प्रोसेस मैं बताऊंगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिक्विडिटी थी. ठीक है, ये वाले लो के नीचे लिक्विडिटी थी. लिक्विडिटी, लिक्विडिटी. And then I went just long right over here and then I ate SL over here. अभी यहाँ पे what was the problem कि मैंने SL बहुत छोटा रखा था. I would have extended this SL और उसको ज़्यादा बफर देना चाहिए था. एक्चुअली मेरा अराउंड 1:3 1:2 में ट्रेड खत्म हो जाती है, एंड माई इनिशियल प्लान वॉज टू नॉट टेक अ ट्रेड, क्योंकि वॉट आई जनरली प्रीफर इज इफ आई लॉस्ट वन ट्रेड इन लंडन सेशन देन आई वुड डायरेक्टली ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन. बट यहाँ पे क्या हो गया कि आई सॉ सेटअप एंड दिस वाज एक्चुअली अ गुड सेटअप एंड एक्चुअली अ A plus setup for me. Okay, but I ended up losing on these two, which overall led me to a lot liquidity. Yeah. So basically, this was the whole plan. This was the whole trade. अब देखो यहाँ पे भी I actually wanted to go long, but then I was like
कि एशिया है, क्या पता मैन्युपुलेट कर दे, क्योंकि देखो यहाँ का भी एक हाई ले लिया था, ठीक है, और यहाँ का भी ऑब्वियसली लो ले लिया था, तो आई वॉज skeptical अबाउट दिस ट्रेड, so I did not enter off of this and then I entered when the range broke out and then we continued higher. So yeah, this was pretty much it. uh, Also abhi I was looking for something in NY, but then I was like, we already had two losses for the day, so I would be out from the market, and yeah, let's focus on something else. So बस यही था, यहाँ पे वी एट जर्मन 40 में काफ़ी तगड़ा लॉस था, but it's okay. Markets are open 24/7, so I will be looking for opportunity continuously in London on your session. So this was it. Make sure you subscribe. This was day one of uh, reaching 100K in funding, and pretty much it. Uh, I think you can see the result over here or here, or whatever the PNL is. But मैं MetaTrader का screenshot डाल दूंगा. I hope you like this. Please like and subscribe. I'll see you in the next trade recap. Bye bye.